Dear students, let me present to you two very interesting properties of the correlation coefficient. The first one is as follows. The coefficient of correlation is independent of change of origin. And the second one is that the coefficient of correlation is independent of change of scale. अब आप जाहिर है कि curious होंगे कि what exactly do I mean by this? All right, let's look at the first one. Change of origin. पहली बात यह है कि what is meant by change of origin? Well, students, if we subtract any constant from all the values of x, or if we add any constant to all the values of x, we do this to the random variable x, and we do something similar to the random variable y also, that we are either subtracting a constant from all values of y or adding a constant to all values of y. जब हम इस तरह का प्रोसेस करते हैं, दिस इज कॉल्ड चेंज ऑफ ऑरिजिन. और जो प्रॉपर्टी है वो मैं दोबारा कहती हूँ कि मैंने ये आपसे कहा कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है that is independent of change of origin. So exactly what do I mean? I mean, as you now see on the screen, that rho of dx dy is exactly the same as rho of xy, where dx itself means x minus a, where a is some constant, and dy means y minus b, where b is some other constant, which can also be equal to a, but that is a special case. So अभी जो मैंने जो कुछ कहा मैं दोबारा आपके सामने रखती हूँ. मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अगर आपके पास दो रैंडम वेरिएबल्स हैं x और y, और उनका आपस में आप कोरिलेशन निकालना चाहें, तो एक तो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड जो उसका फॉर्मूला है वो अप्लाई कर देंगे. कभी कभी ये होता है कि अगर वो बहुत लार्ज वैल्यूज़ हैं तो हम अपनी जो कैलकुलेशंस हैं उनको आसान बनाने के लिए चेंज ऑफ ऑरिजिन वाली टेक्निक अप्लाई कर देते हैं. यानी एक्स वेरिएबल की वो जो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं उनमें से हर एक में से एक पर्टिकुलर नंबर ए जो हम खुद ही चूज़ करते हैं, कोई ऐसा नंबर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उन सब में से कि वो जो रिजल्ट आए दे आर स्मॉल, छोटी वैल्यूज़ हमें मिल जाती. वी डू द सेम फॉर वाई, and then we compute the correlation coefficient. So what I'm saying to you is this, कि चाहे आप ओरिजिनल वैल्यूज के साथ कोरिलेशन निकालें, चाहे चेंज ऑफ ऑरिजिन करने के बाद निकालें, द रिजल्ट इज द सेम. इसी तरह जो दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपके सामने रखी वो ये थी कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल. Now, what do we mean by change of scale? In this case, it is like this, that if we divide every value of x by some constant, or multiply every value of x by some constant, and do the similar procedure for the random variable y also, then again, this will not affect the correlation coefficient. और जैसा कि अब आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, we can say that rho of uv is exactly the same as rho of x and y, where u itself is x over a, where a is some constant that we have chosen, and v is y over b, where b is some other constant that we have chosen. तो यहाँ भी जो बात मैंने थोड़ी देर पहले कही उसी किस्म की बात है. अगर हमारे एक्चुअल जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो वैल्यूज हैं दे आर ह्यूज, वेरी बिग वैल्यूज, एंड वी वांट टू सिंप्लीफाई आवर कैलकुलेशंस, समटाइम्स वी अडॉप्ट दिस पर्टिकुलर टेक्निक दैट वी मे डिवाइड एवरी वैल्यू बाय सम कांस्टेंट. एक्स के साथ भी ऐसा कर लें, वाई के साथ भी ऐसा कर लें, और वो दोनों कांस्टेंट बराबर भी ना हो, that is all right.
तो उसके बाद if we compute the correlation coefficient with these new values, the result is going to be exactly the same as what you would have got if you were to compute the correlation coefficient with the original values. तो ये जो दोनों प्रॉपर्टीज मैंने आपके सामने रखी, जो आखिर में बात इस ज़िमन में मैं आपसे करना चाहती हूँ, वो ये है कि कई दफ़ा हम इन दोनों प्रॉपर्टीज को इकट्ठा करके भी अप्लाई कर देते हैं. So if I say, for example, that let m be equal to x minus a over h, and let n be equal to y minus b over k, तो अब अगर आप कंप्यूट करें कोरिलेशन कोफिशिएंट m और n का, that will be exactly the same as what you would have got if you were to compute the correlation coefficient of the original variables x and y.